संगीतकार पंडित देवेंद्र वर्मा की एक दिन की शिविर का आयोजन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पर करवाया गया था। दरअसल फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के छात्रों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल की ओर से ये एक दिन की शिविर आयोजित करवाई गई थी, जिसमें संगीतकार पंडित देवेंद्र वर्मा खास मुंबई से पहुंचे थे। इस शिविर का शीर्षक बंदिशों में सौंदर्य तत्व रखा गया था। बड़ी तादाद में छात्र भी इस दौरान मौजूद रहे थे। गायन विभाग फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तरफથી આજે એક દિવસીય શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પંડિત દેવેન્દ્ર વર્મા બ્રજરંગ ઉપનામથી અનેકો રચનાઓ એમણે રચી છે। દિલ્હીથી પધાર્યા છે। અત્યંત વિદ્વાન એવા રચનાકાર છે, ગાયક છે, વાદક છે અને ગુરુ છે। બંદિશ એ ભારતીય રાગ સંગીતનો એક પ્રમુખ આધાર છે। બંદિશમાં સાહિત્ય, રાગ, સ્વર, લયતાલનું સૌંદર્ય એ બહુ જ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે અને એના અનેક વિવિધ પાસાઓથી એમાં જે છુપાયેલા સૌંદર્યના તત્વો છે એમનાથી વિદ્યાર્થીઓને પરિચિત કરાવવા, એમને એની આંટીઘૂંટીઓ શીખવાડવી એ આ આયોજનનો મુખ્ય હેતુ છે। અને પંડિત દેવેન્દ્ર વર્માજીનો અનુભવ એ બાબતમાં બહુ જ उपयोगी निवड़शे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।